As we all have headed to last day of the CME, our next resource person of the program is Professor Raisur Rehman, Department of Moalejat, Unani, Tibbiya College, Karulbagh, New Delhi. He is one of the eminent personalities in the field of the Unani medicine. He served as Director General of largest and central research body of Unani medicine, CCRUM, New Delhi. He has been an advisor in Ministry of Ayush, Government of India. He has about 30 years of experience in research, teaching, clinic and administration so far. Under his directive as Director General, the Council has achieved several milestones in such a short span of time. Under his stewardship, CCRM initiated Ayush Award Scheme in various categories such as Young Scientist Award, Best Teacher Award and Lifetime Achievement Award. This award scheme is first of its kind recognized by Ministry of Ayush, Government of India. He is also in the editorial boards of different research journals besides being on the panel of experts of different media channels. He has closely been associated as an expert, member peer review board and editorial board in a WHO sponsored CCRM project on standardization of Unani terminology and dossier of Unani system of medicine. Professor Rehman has constantly been working for the betterment of Unani medicine, not only in India but also at a global level. Today, he will be delivering lecture on Unani perspective of lifestyle disorder. I request Professor Raisur Rehman sir to come on the dais and please present her. Professor, I think he is missing on this audience. Yes, of course. Professor Amin Sahab, the Honorable Chairman of the Department of Health, Aligarh Muslim University. Professor Raisur Rehman Sahab, Dr. other faculty members from the Department of Health. Distinguished faculty members from the different parts of the country, from the different faculties of Unani medicine in the country. Dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I say good afternoon to all. I am really delighted to be with you, and at the outset I am extremely thankful to the organizers for having invited me to talk about the topic what they have given to me, the Unani perspective of lifestyle disorder. This topic has been developed by the organizers. It has not been chosen by me. This has been chosen by the Unani perspectives of lifestyle disorder. In any case, I am bound to follow the restrictions issued by the organizers. So I will be talking about the lifestyle disorders. You know, the most important lifestyle disorders nowadays are two: the hypertension and diabetes. Third one is obesity, which is least in India, of course, very much common in America. Most of the people are dying because of overeating, obesity. In India, most of the people are dying because of malnutrition, undernutrition. This is the major difference. And this tells you about the political scenario in the two countries, difference between the two countries. In any case, let us be confined to the Unani perspective lifestyle disorders. कैसे चेंज करेंगे? ओके, ऑफिस चेंज करें. Okay. So, Zartuddam Kari in Unani medicine. Hypertension in Unani medicine. Why I am talking about Unani medicine? That's not important. As you know, the term Unani medicine means it has been originated in Yunnan, that's why we are calling Yunnan. In different countries the name is different. In
Iran it is a Persian. In Arab this is Arabic medicine. In China it's the Uyghur medicine. But Unani medicine in India, why it is known as, because it has originated from Unani. But let me tell you, that medicine, Unani medicine, which was created centuries back in Unani, is entirely different than the medicine which is right now existing in India. It's a vast difference. So, whatever the contents in our syllabus is there, and which has been approved by the Government of India under the Act of the Parliament, that's Unani medicine. That is Unani medicine, because this syllabus has been compiled by the Government of India and it has been approved by the Ministry of the Ayush, CCIM, or whatever is the body is there, and that those bodies are recognized by the Parliament of India. That's Unani medicine. This is legal status. Whatever we are teaching, whatever we are reading, whatever we are studying in our syllabus, that's Unani medicine. Irrespective of its origin, it has been included in Unani medicine. So what I want to emphasize is, whatever we are reading in our syllabus, that's Unani medicine. This is a legal status. Nobody can challenge it, because it has been approved by the Government of India, law of the land. So translation is of course Zaktuddam, but the hypertension Unani medicine is the same whatever is there that has been included in our syllabus. बात तो सही करेंगे, थोड़ा मुश्किल नजर नहीं आता, ठीक है, हर देखिए. So the term hypertension or blood pressure were introduced very late, but concept of the hypertension as such was not there in this name, but of course it was recognized long back, around 2600 years back, and by recognizing the heart pulse. Whenever the physician used to see the pulse, palpate the pulse, and they found it is a heart pulse, they used to understand there is something abnormal. There is something abnormal, and later on that abnormality was recognized as hypertension. So about the concept, about the understanding of the hypertension was long back, 2600 years back, right? And how, why we call aquapuncture, venesection, bleeding means by leeches, whatever it means, whenever the blood was released from the veins, the heart pulse was subsided and the symptoms of the heart pulse was subsided. Getting my point? Means whatever is there, the hypervolemic, they used to take out the blood in order to subside the heart pulse. So they had some understanding about the hypertension and their treatment. Around 1700 BC, there is no way of recognizing the hypertension, the measuring the blood pressure. In 1733, Reverend Stephen Hales measured the arterial pressure in horse. First time the arterial pressure was recognized by this scientist. And in 1905, NC Forth reported the method of auscultation of the brachial artery through which we are measuring right now the blood pressure was first time introduced in 1905. Zinga Lokai in 1896 he invented the sphygmomanometer, and after that the proper recognition of the blood pressure was there. Means before this 1896 there was no measurement of the hypertension, and hypertension term was not there. It has come later on after 18 centuries. So talking about the Zaktuddin Kavi in Unani literature is not there. As such it is not available. We have borrowed this term from the allopathic system of medicine, modern system of medicine, and we have translated hypertension to the Zaktuddin Kavi.
So heart pulse used to be the nabd sulb, नब्ज लयन, नब्ज सुल्ब, ये दो किस्में हैं नब्ज की, आपने पढ़ी होंगी। मुझे आलाय दीवान के लिहाज से नब्ज सुल्ब होगी या नब्ज लयन होगी या नब्ज मौत होगी। The nerve sulb is nothing but it occurs in the old age because of the arteriosclerosis. And arteriosclerosis, the position of the atherosclerosis, type of the atherosclerosis, if the hardening of the pulse and the compliance of the pulse is lost, elasticity of the artery is lost, the blood pressure rises, and especially the systolic pressure is rising. The pulse is, heart pulse is nothing but the nerve sulb. Now the question is, what is blood pressure? Why blood pressure? Any pressure, blood is circulating in order to perfuse the oxygen and nutrients to a different part of the blood. This is the fundamental, requirement of the blood pressure in order to facilitate the circulation of the blood to different tissues and especially to the brain, because the blood has to circulate against the anti-gravitational force. It has to go up. Under the effect of the gravity, everything comes down. The blood has to go up, and because of that, the God has made pumping station, and blood is pushed, and this blood is pushed because of the blood pressure. The moment blood pressure is down, the circulation of the blood to the brain is impaired, and the patient will lie down. And if it continues to be there for 3 or 4 minutes, then the death of the brain will take place. So this is the basic. Then what is blood pressure exactly? It's a lateral pressure exerted by the blood column on the blood vessels, wall of the blood vessels, and it depends on the 4 important factors: that's a cardiac output, myocardial contractility, peripheral resistance, and viscosity of the blood. That the 4 important factors are there on which the blood pressure is dependent. Any factor is, imbalanced, the blood pressure either it will go up or it will come down. Then what is hypertension? What is hypertension? The simplest definition of the hypertension, and this is forever. This is for, it keeps on changing. The classical definition keeps on changing. So the modern definition keeps on changing. The classical definition is chronic medical condition with a persistent elevation of the blood pressure at rest. If the blood pressure is persistently high during rest, it's hypertension. It's hypertension. But of course, reading keeps on changing. I will let you know why this keeps on changing. It is arbitrary all the time. There is no scientific background. And the people sit together and they used to say this pressure is higher than keeps on changing. That depends upon postmortem changes. In India, postmortem is not mandatory, but in foreign countries, postmortem death after death, postmortem for every case is mandatory. So they used to collect the data. What was the cause of the death? And if death is because of cerebrovascular accident, because of the heart failure, and there was an involvement of the blood pressure, so they used to keep on changing the blood pressure. मान लिया 140 मानते थे normal, और 140 में पिछले 10 साल में डेथ इतनी ज़्यादा होगी, तो that means, and that's what because of cerebral hemorrhage. So they took a decision that this pressure is high, so let us reduce it. Let us keep it below this reading. So this reading keeps on changing. That I will return. The question is why this is hypertension. If the blood pressure keeps on rising during rest, it's hypertension. It's hypertension. And that rest definition is again different. It should be physical as well as mental rest. Mental rest is just impossible if your wife is there. Isn't it? Okay. In any case, so what is that epidemiology? In India, the hypertension keeps on increasing. By the passage of time, it was earlier not a disease of the underdeveloped countries, developing countries like India.
Earlier, this used to be the disease of the developed countries of America, Europe, Britain, etc. But now it is becoming very common in India too. Either we have developed or we have become cunning. Let us decide. Let us interrogate ourselves. We are cunning or we have developed. I think we have not developed. We have become cunning. जब हम बदमाशी करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. हम सोचते हैं दूसरे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने से पहले हम अपना ब्लड प्रेशर. If this disease is increasing in Indian population, so either we have developed or I left this decision is to be taken by yourself. So earlier it was at 30%, which has increased up to 64%. See difference. Earlier it was around 30%. And why it is there? This is the difference between earlier thing. The definition of the hypertension has been changed. 6th and 7th guidelines were later on. क्या चेंज हुआ? 2017 में जो गाइडलाइन आई अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द हार्ट, in 2017 the guidelines came. According to that, the hypertensive population in India has increased drastically. It has increased from 30% to 64%. See the difference. So almost more than double. 60% of the people of India are affected by hypertension. It's a very major difference. It's a very major difference. In United States, 78 million adults have hypertension. Hypertension prevalence is 34%. In blacks में है और नॉन ब्लैक्स में वाइट्स में है 28%. ये डेटा दूसरे हैं. 27% is Mexican Americans. And hypertension rates much higher in black African. Black is higher. In white it is less. This data is also there, and this is because of the race and genetic involvement. What is JNC? Joint National Commission Cardiology. Joint Nation Commission for Cardiology. I don't remember the original classification is there. Normal less than 120. Systolic pressure. Listen, this is very important point. In systolic pressure, if it is less than 120, and diastolic less than 80, this is supposed to be normal. Pre-hypertensive 120, 139, 80, 89 mmHg. It's normal. Pre-hypertensive. Stage 1. 140 to 159 systolic and diastolic 92 to 99, right? And stage 2 hypertension more than 160 systolic and 100 diastolic, it is supposed to be the stage 2. This is 7th GNC classification. And this criteria has been recently revised in 2017, and this is known as ACC, American College of Cardiology or American Heart Association 2017. It has been revised. तो पहला डाटा जो मैंने बताया था कि 43% था, this was because of JNC classification, और जब 64% इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है वो इस क्लासिफिकेशन के वजह से, and that is here. वापस कैसे लगे? ये अभी वापस Okay, so this has been changed. Normal वही रखा उन्होंने same, but elevated pre-hypertensive has been changed to elevated 120, 129. It is supposed to be the elevated or pre-hypertension, and it is of course same. मैं क्यों बता रहा हूँ ये? मैंने अभी बताया ये डेटा क्यों चेंज हो रहे हैं? Because of the complication occurring during the normal phase of the hypertension. जिसको हम पहले नॉर्मल समझते थे, उसमें भी हार्ट अटैक्स होने लगे, उसमें भी सेरेब्रल स्ट्रोक्स होने लगे, उसमें भी किडनी डैमेज होने लगी. तो उन्होंने कहा no, it is not safe. Let us come down. Let us bring down. So that this has been revised, right? And high blood pressure is considered. Stage 1 is 130, 139, 80 to 89. High blood pressure. Stage 2 is 140 or higher,
and 90 are higher, and hypertensive crisis is 180 or more than 120. This is also known as malignant hypertension if it is associated with the value. So on the basis of that, this recent classification, what is exactly hypertension? This is very important definition. Please remember this. Please pay attention on it. Hypertension can be defined as the sustained rise or sustained elevation of the sustained rise of the blood pressure, arbitrary limit of the systolic blood pressure above 130 mmHg and diastolic above 80 mmHg, irrespective of any age and sex during this. तीन चीजें important charge is definition. The 4 important points there. The first one is it must be sustained rise. The rise has not be, keeps on changing. आपको थप्पड़ मार दिया मैंने, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया. आपने मुझे कुछ कह दिया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया. But this is, आपको हंसा दिया तो आप खुश हो गए, ब्लड प्रेशर डाउन. This is not hypertension. Hypertension must be sustained for longer period of time. Number 1. And this is second thing is this is arbitrary. It is not scientific. It is based on the discussion of the scientists. And the third thing is it must be above 30 systolic and diastolic, of course, more than 80 mmHg above, irrespective of any age and sex. It has no relation with the age. हमने पढ़ाया था पहले एज है, बड़ी उम्र में है तो बढ़ गया. No. If it is more than this, this is hypertension, either in children or in adult or in young or in male or in female, whatever it is there, it is irrespective of age and sex. And of course during rest. Rest is mental rest as well as physical rest. Okay. And this guideline is there, hypertension, for the detection, prevention, management and treatment of the hypertension. Hippocratic theory of akhlaq, it is there. The body contains 4 humors, that is, humors, dam, balgam, sakha. Right proportion in quantity, in terms of the quantity, equilibrium in terms of the quantity, right equilibrium in terms of the quantity or quality of the humors constitute the health. And the moment the equilibrium of the akhlaq is lost in terms of either in terms of the kaifiyat or in terms of the kamiyat, quality and quantity, if this equilibrium is changed, lost, the disease. And of course hypertension is not free from this definition. It is also there. I will discuss how the equilibrium is lost in hypertension occurs. The term in the we used to compare the thing, है बात वही. मैं आपको बताऊं, मैंने पहले फैक्टर बताया कार्डियक आउटपुट. About 70 ml of the blood in each heartbeat is ejected into the aorta, and that constitutes the systolic pressure. The moment amount of the blood is reduced, pressure will come down, or the amount of the cardiac output has increased, the pressure will increase. And what is intala exactly? Intala, literal meaning is fullness of the body with the fluids. ये है बॉडी में फ्लूइड, मवाद, मेटल का इंतला हो जाए उसमें. And it has been classified into 2 varieties. Unani scholars have described it as intala bahzul awayya, rajabi, or intala bahzul quwa. पहले बदल जाए यार, इसको भी कुछ परेशानी आ गई. Intala bahzul awayya is defined as a condition in which the quality of the humors and vital force is normal, but the quantity of the humors is increased. Means qualitative change is there. कमियत है, उसमें फर्क पड़ता है. कमियत के लिहाज से बढ़ जाती है, तो उसको हमने कहा बहुत बढ़ गया. ठीक है ना? खून, ओके, अखलाक के हैं, खून के कुछ भी.
जो आपके आर्टेरियल प्रेशर में द ब्लड विच इज सर्कुलेटिंग इनटू द आर्टेरियल प्रेशर हैज इंक्रीज इनटू द क्वांटिटी एंड दैट्स इंतला बाहस आया. सो increased volume of the blood will increase the cardiac output and systolic pressure will go up. Getting your point? So intla bahasbul ayya will cause rise in the systolic blood pressure and that's a isolated systolic hypertension. And second is if there is a derailment of the quantity and the quality of the tumors, this condition in that bahasbul follow. See, either the quality is changed, quality is increased, that's a bahasbul ayya. If the quantity is changed or quantity and quality both have been changed, this is termed as bahasbul ayya. And how it is affecting the blood pressure, I will discuss later. Now, symptoms of the intala, क्या symptoms होते हैं? Nafs may become hypervolemic, that's known as nafs azim. Nafs azim के 3 components are there. नफ्स अजीम मुझे लगता है पहला क्या है, अदल्ला नफ्स का पहला कोई पढ़ाता है नफ्स इसमें हैं? मिक़दार इंबिसात, एग्जैक्टली राइट, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू. सो मिक़दार इंबिसात के लिहाज से नफ्स में 3 चेंजेस आएंगे. नफ्स तवील होगी, तूल में बढ़ेगी, अर्ज में बढ़ेगी, अरीज होगी, बुलंदी बढ़ेगी. अगर तीनों चीज नफ्स इंतला मीन्स नफ्स अजीम मीन्स नफ्स हैज टू बी तवील, नफ्स हैज टू बी अरीज, नफ्स हैज टू बी मुशर्रफ. ये 3 तब्दीलियां आएंगी तो हम अजीम कहेंगे. और ये तीनों तब्दीलियां तब आएंगे जब देयर इज ए इंतला, मोर ब्लड इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी सिस्टम, दैट्स नफ्स अजीम कॉजिंग द सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. एंड नफ्स मुंतली फुलनेस ऑफ द पल्स, ये दूसरा पैरामीटर्स है नफ्स को देखने का दल्ला नफ्स में. ये इंतला खला के लिहाज से, पहला क्या था क्या होता है इंबिसात के लिहाज से, हेल्थी कितनी कितना इंबिसात होता है, कितनी हेल्थी नफ्स, कितनी एक्सपेंशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है. और दूसरा क्या है, नफ्स इज एक्सपेंडिंग और नॉट, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट द वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड बाय मीनिंग दैट्स ए नफ्स मुंतली. सेकंड थिंग, देयर इंगोजमेंट ऑफ वेसल्स, हार्ट and head, eyes, heaviness in head and eyes. It's an important symptom of the hypertension and it is common in the intera. It is common in the intera. See, a decrease in concentration, again the hypertension compared to the two diseases, intera and hypertension, and the symptoms are sharing, common symptoms are being shared. Decreased concentration, redness of the complexion, fatigue, etc. बदल जाएगा क्या? ये अलीगढ़ वालों का, अलीगढ़ वाले मेरी वजह से कर रहे हैं, रिश्ता है ना, तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं. रिश्ता. Then epistaxis, it's an important symptom of the hypertension. नाक से खून आता है जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है because of the rupture and the same thing happen. Same Professor Anwar has come. Okay, the same epistaxis. And the symptom, this is a common symptom in intera and the hypertension. Jumhaiya आना, facial puffiness, bleeding from the oral anal orifices, sweat test. See, these are the common symptoms which are being shared in the 2 diseases, intera and the hypertension. You can compare the 2 things. अब आइए बात करते हैं हम इंतला बाहसबुल, जो बता चुका हूँ मैं आपको. Quantity of the blood is increased. Will cause cardiac output has increased and cardiac output has increased because the systolic blood pressure. That's a systolic, isolated systolic pressure. And intala bahasbul ayya, it's an important point which I wanted to share with you. I have thought many times about it, many years about it, and then I have achieved this conclusion. Sharing with you, you please pay concentration on it and you say whether I am right or wrong. Change in the viscosity, हस्बुल ख़वाह पहले मैंने क्या बताया था, in terms of the quality or the quantity or in terms of the quality or in quantity and quality both change, it is known as because इंतला हस्बुल ख़वाह. ठीक है ना. अब देखिए आप क्या होता है, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ये हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा. Change in the viscosity is another important factor for deciding the blood pressure. मैंने शुरू में बताया है आपको
चार फैक्टर, कार्डियक आउटपुट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रेशर रेजिस्टेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। एंड विस्कोसिटी बदल रही क्या हो, देखिए चेंज इन द विस्कोसिटी विल कॉज, चेंज इन द विस्कोसिटी मींस ऐसी चीजें जो ब्लड को बहुत विस्कस बनाती, सॉल्वेंट बढ़ जाए, शुगर जितनी होती उससे ज्यादा हो जाए, नमक जितना ज्यादा उससे ज्यादा हो जाए, यूरिक एसिड जितने होते हैं उससे ज्यादा हो जाए, WBC जितनी क्वांटिटी उनसे ज्यादा हो जाए, RBC जितनी होती है उससे ज्यादा हो जाए, लाइक पॉलीसाइथेमिया वगैरह। Anything which is changed in the biochemistry of the blood, this will definitely change the viscosity of the blood, and this will definitely ultimately change the osmotic pressure of the blood, and the result will be what? Calcium is changed, calcium of the blood is getting changed, and this will cause affect the blood pressure. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए समझने की कोशिश करें। विस्कोसिटी बढ़ी, बढ़ गई विस्कोसिटी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर विल राइज, खून निकलेगा नहीं इतनी आसानी से, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और विस्कोसिटी किन किन चीजों से बढ़ सकती है ये बात करते हैं। इट कुड बी हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया मोर सोडियम आयन, ज्यादा सोडियम, नॉन फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरग्लाइसेमिया, एवरी हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट, डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज एंड द ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन द इम्पॉर्टेंट कजन्स, दोनों कजन्स हैं, लेडी कजन्स, नॉट द मेल कजन्स, ठीक है ना। और ये दोनों साथ साथ रहना पसंद करते हैं, अलग नहीं कहते हम साथ साथ रहे, हमारे हस्बैंड अलग हैं लेकिन हम रहेंगे साथ। So every hypoglycemic diabetic patient is hypertensive. Also hyperglycemia, there is a change in the biochemistry of the blood. Osmotic pressure is changing. और भी factors हम बात करेंगे, पहले ये polycythemia वाला hypertension is there, leukemia hypertension is there, thrombocytosis hypertension is there, hyperuricemia, uric acid is increased, hypertension is there, hyperfibrinogenemia, fibrinogen when there is coated the blood is getting changed, and uremia, urea blood viscosity of the blood is changed. That means the caifiyat of the akhlaq is getting changed. It's a intra-bahasbul, and that results in the diastolic pressure. So systolic as well as diastolic pressure is changing, and it happens in case of the intra, which has been described in Unani medicine long year back. Before the invention of the sphygmomanometer, the concept of the blood pressure came into the existence of the modern system of the medicine. Correlation between the यबूसत रूप and the temper, ये बता चुका हूँ। यबूसत से बढ़ने के नतीजे में, you know, during the old age यबूसत बढ़ती है, what we call as, and that causes hardness of the pulse, यबूसत बढ़ने की arteriosclerosis, and the expansion of the arterial wall is decreased. That what we call as compliance of the arterial system, and systolic hypertension is there. This is again a correlation between the Moalejat and hypertension. Now, what are the factors for the hypertension? ये आपको पढ़ चुके हैं, मुझे ख्याल से पहले एक दिन वो आए थे तो आपको बता गए हैं, यार आपको पढ़ाते हैं, क्या बताएंगे आपको ये सब चीज़ें मालूम है। जेनेटिक फैक्टर्स, ब्लैक में ज़्यादा होता है, छोटी एक बात मैं कहना चाहूँ, फीटल एंड इंट्रा-यूट्राइन लाइफ, इट्स इम्पोर्टेंट। It has been observed by the various studies that children born with the LBW, low birth weight children, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका आर्टियल सिस्टम कमजोर होता है। आर्टियल सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, किडनीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, किडनी भी छोटी होती है, हाइपोप्लास्टिक किडनी, नॉट एग्जैक्टली हाइपोप्लास्टिक बट द साइज इज ऑफ कोर्स लेस देन द नॉर्मल। अब वो बढ़ते रहते हैं बच्चे, जब बच्चे बड़े होते हैं और उनको बढ़िया खाने मिलते हैं। आपको मालूम है एक बार 2012-13 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, इफ यू रिमेंबर, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था पूरी दुनिया में ग्रेन्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। उसने क्या कहा था, ये हिंदुस्तानी बहुत खाते हैं इसलिए इनके वजन बढ़ रहे हैं और हमको खाना महंगा मिलता है, ज़्यादा खाने में। 2013 में उस टाइम जब आया था बयान तो मेरे समझ में आया कि बात कुछ सही कह रहा है। हम लोग वैसे थे भिखारी थे, वी वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, मोस्ट ऑफ
अब भी 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है, पहले 80% थे, 90% हम सब फकीर थे। छोटा देख लीजिए, हमें कहने की जरूरत, मैं तो फकीर था, मैं भी ना। आप अपने अपने घरों को देख लीजिए, तो हमें खाना कितना मिलता था, क्या नहीं मिलता। बच्चे LBW में पैदा हो गए, 7 महीने में 6 महीने में डिलीवरी हो रही है, 2 किलो का बच्चा, 1.5 किलो के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ये सिलसिला चलता है। अब क्या हुआ, अब अल्लाह का शुक्र है हमारी इकॉनमी बेहतर हुई, हम पढ़ लिख गए, पैसे आए, वजन बढ़ा, धीरे के 82 किलो वजन हो गया। पैदा हुए थे 2 किलो के, 1.5 किलो के, हो गया 82 किलो। तो क्या होता है, द आर्टरी सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, द किडनी इज नॉट वेल डेवलप्ड, वेट बढ़ जाता है, डिमांड इज इंक्रीज, सो इट रिजल्ट्स इनटू हाइपरटेंशन। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड, तो ये रिजल्ट्स इनटू हाइपरटेंशन। तो जितने भी इंडिया के अंदर ये बढ़ रहा है हाइपरटेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ fetal factor or intrauterine. Low birth weight baby used to develop the hypertension later period of the life because of the increase in the weight. Then of course environmental factors are there, ये gender race सब पता है आपको, साल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, सब पता है ये। Other electrolytes of course very important factor, calcium and potassium. If calcium is low or potassium is low, it results in hypertension. I will let you know how. And the physical activity, reduced activity will cause hypertension. ये पहले से सवाल था, मैं इसको आगे बढ़ ले यार। Okay. Then psychosocial status, of course, another important point for deciding hypertension. Stress level जब ज़्यादा होता है, smoking and alcohol, the two important factors are there. Smoking in any case is bad, and of course alcohol also. अब बात नहीं करेंगे कितना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। Insulin resistance, it keep on increasing hypertension. I will discuss in it. Then obesity, hyperlipidemia is another important risk factor. Metabolic syndrome, hyperuricemia, medication, stress, contraceptive pills, etc. are very important factor for the essential hypertension. Then type, okay, इसको बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको सबको आता है। Type says on the basis of cause, if cause is not known, why? How? You investigate the patient, you examine the patient and investigate the patient. If you do not discover any obvious cause, this is type hypertension or essential hypertension. In 80 to 95% of the cases, this is essential hypertension generally causes. Secondary hypertension, 5 to 20%, different various causes are there. We will discuss later on. Then on the basis of the course of the disease, benign hypertension and malignant hypertension, इसको बात कर लेते थोड़ी सी। Benign hypertension, slow rise, insidious rise, slow rise, exists for longer period of time, doesn't cause complication usually, and usually it is not fatal. Usually it is not fatal until this complication has taken place. चलता रहता है धीरे धीरे, फ्रेंडली है, फ्रेंडली तो नहीं है लेकिन चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है, and even the patient is not known he is hypertension. During the course of the investigation, during the course of the examination, it is discovered and the patient is usually symptomless. There is no symptom. And malignant hypertension, sudden rise, all of a sudden, very serious symptom, and it is always associated with the papillary edema. Let me tell you, this is very important point. Do the fundoscopy. If you find the optic protrusion is there in the retina, optic nerve protrusion has taken place. This madam सो रही हैं आप, या तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, या आप किसी को देख रही हैं ख्वाबों में। अच्छा, देखिए देखिए, ये एज है आपकी, देखिए। I don't mind. क्या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है आपके लिए इस टाइम? तो मैं ही नहीं हूँ मतलब, एक बार कह दीजिए हूँ कि नहीं। मैडम सो रही थी ना, इसलिए मैंने उनको जगाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। चलिए, मुझे आपने कहाँ घुमा दिया, मैं क्या बता रहा था? हाँ, पैपली जीवन के बच्चे भूल गया यार सब, आपके चक्कर में malignant hypertension. Okay, so the papilledema has to be there, and the blood pressure is very high, around more than 180 systolic and more than 120 diastolic, associated with the papilledema, severe headache, burning of the region, and if not treated, sudden death. And if treatment has taken place, even the life expectancy is not very high, in some months to some years. Usually it is fatal. ठीक है ना?
पेप्टिडेमा नहीं मिलता है, ब्लड प्रेशर कितना भी हो हम उसको नहीं कहेंगे मैलिग्नेंट. द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इज बेस्ड ऑन द पेप्टिडेमा, protrusion of the optic disc in the course of the optic examination or thermic examination. Then these are the various causes for the secondary hypertension. These causes there, starting from the pituitary edema, thyroid disorder, hyperthyroidism, Conn's syndrome, that's a hyperaldosteronism, Cushing syndrome, pheochromocytoma. It's a tumor of the medulla of the adrenal gland. Then vascular causes are the either there is a coarctation of the aorta has been narrowed, so blood pressure बढ़ जाएगा, ठीक है ना. Then renal artery stenosis, polyarteritis, thromboangiitis, obliterans. These are the various diseases of the blood vessels, which causes narrowing of the blood vessels and the device. Then renal causes are there: parenchymal renal diseases, renal calculus, hypoplastic kidney, and the systemic sclerosis, mutation in the genes. These are the risk factors. So it is a kidney and autonomic nervous system increase in intracranial patient. Because of any reason, the increase in intracranial patient is there. Maybe brain tumor, maybe CVA, whatever it is. So the hypertension will be there. And toxemia of the pregnancy, during the course of the pregnancy, sometimes there is a preeclampsia, sometimes there is eclampsia. Both are now covered under the toxemia pregnancy. Then could be there. Then medication. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and steroids and oral contraceptives और ये बहुत सारे monoamine oxidase inhibitors etc. Those are associated with our disease of the depression etc. उसके जो disorder उसके साथ में hypertension है. क्या बात है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसको? वामिक साहब ने कुछ कह रखा है क्या इसको? आगे. अच्छा ठीक है, थैंक यू. आपको ब्रेक लगाने के लिए बताया. अच्छा मुझे ब्रेक डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब तो ब्रेक लगी हुआ है यार, क्या बचा है, गुजर गई ज़माने. अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, खैरियत से हैं आप? सब बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, अपनी बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, सब कुछ बदल गया सब. चलिए. Then कुछ other forms of the hypertension exactly. Let's see. White coat hypertension. This hypertension is in the patient. Whenever they see the doctor, their blood pressure is increased. That's white coat hypertension. डॉक्टर को देख कर डर लगता है, एंजाइटी लेवल बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन होता नहीं उसको. Let me tell you. This is white coat hypertension. No need of any treatment. डॉक्टर को मत देखो, व्हाइट कोट उतरवा दो, किसी और दिखाओ, ब्लड प्रेशर ना ऑन की देखो, तो उससे डर की वजह से. वैसे डॉक्टर इतना डरने की चीज़ नहीं होती है, पता नहीं. सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बढ़ेगा, डायस्टोलिक नहीं बढ़ेगा. इट इज यूजली सीन इन थायराइड डिसऑर्डर एंड स्पेशली इन हाइपरथायराइडिज्म एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. सिर्फ डायस्टोलिक बढ़े, इट इज सीन इन हाइपोथायराइडिज्म. Hypothyroidism seen in diastolic pressure, hyper associated with systolic hypertension. Labile hypertension means it keeps on changing. Sometimes you find hypertension, after some time your blood pressure is reduced. So this keeps on changing. Frequent change in the blood pressure, reading of the blood pressure is there. Sometimes it is hypertension, sometimes it is. It is known as labile hypertension. The patient has to be kept under the supervision of the doctor for a longer period of time, because this labile hypertension can convert to the permanent hypertension in the course of time. So patients need constant supervision of the doctor. And refractory or resistant hypertension, this is a very important one. If the patient is being treated with the drugs, 3 drugs, 4 drugs, and out of which one drug is diuretic in nature, ठीक है ना, 3-4 दवाएं हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, डायरेटिक्स उसमें से एक है, और even then the patient is not responding properly to your treatment, the target reading of the blood pressure is not being achieved. This is called the refractory or resistant hypertension. So mechanism of the hypertension, intravascular वॉल्यूम को बढ़ेगा, सोडियम आयन बढ़ेगा जब इम्तला बहस्बुल औया, ठीक, इम्तला बढ़ जाएगी, इंट्रावैस्कुलर हाइपरटेंशन वॉल्यूम बढ़ने से. इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनहैंस एसएनएस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू अल्फा एड्रेनलिन फाइबर रिसेप्टर्स में डिटेक्शन होता है. उसमें क्या होगा, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कैटेकोलामिन्स आर इंक्रीज, was in the vasoconstriction, endothelial dysfunctioning,
vascular smooth muscle proliferation, increase arterial stiffness, nerves sulb, वही बात करी मैंने, ये मुझसे पढ़ रही है। then this result hypertension बदल जाएगा। अच्छा उधर हम क्यों भाई? अच्छा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, टॉकिंग टोक्यो क्या है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। नहीं यार नहीं बदल रही भाई, ये तुम्हें को देना पड़ेगा। आप वहीं खड़े हो जाइए। कहाँ खड़ा हूँ? नहीं सर आप कैसे मैं थक रहा हूँ, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ आगे बढ़ा दे यार, बस बस। Then renin angiotensin aldosterone system, another बताऊंगा अभी आपको, and the inflammation is there. Inflammation is associated with endothelial dysfunction. जब भी देखें, जब भी कभी inflammation is associated with endothelial dysfunction, और endothelial dysfunction और भी causes हैं like smoking, hyperglycemia, hyperuricemia and medication. ये blood pressure जो endothelium है, it's very important part. Let me tell you. असल में हाइपरटेंशन का जो टारगेट ऑर्गन है ना, अपने वो सुन होंगे, दिमाग है, दिल अपने आप में है, गुर्दे हैं और भी ऑर्गन है, ये लेकिन सब बेकार की बात है। सबसे पहला जो उसका टारगेट ऑर्गन है वो इंडोथीलियम है। ब्लड वेसल्स की इंडोथीलियम उसको डैमेज करता है। अब वो डैमेज ब्लड वेसल की इंडोथीलियम ब्रेन की हो रही है तो ब्रेन का नाम देंगे, किडनी की हो रही है तो किडनी का नाम देंगे, हार्ट की हो रही है, कॉर्नियल आर्टरी हो रही है, कॉर्नियल आर्टरी। ये वेस्कुलर इंडोथीलियम ही इफेक्ट और उसके प्रेशर बढ़ता रहता है, डैमेज करता रहता है, प्रोलिफरेशन इज देयर, डिसफंक्शनिंग इज देयर, और उसके नतीजे में क्या होगा, क्या और भी कुछ कॉजेज, स्मोकिंग, हाइपरग्लाइसेमिया, सारी चीजें क्या होता है कि इससे ना ऑल द टाइम द एंडोथेलियम व्हेनेवर देयर इज सम इंजरी इट यूज्ड टू secrete nitrous oxide NO and it causes vasodilatation, so blood pressure remains normal. Vasoconstriction, hypertension, vasodilatation, blood pressure is raised. So this endothelial damage, dysfunctioning is because the constant pressure of the endothelium. और उसके causes और भी होते हैं, smoking, hyperglycemia, hyperuricemia, और कुछ मीडिएटर्स हैं जिसकी वजह से होता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उसकी वजह से हो सकता है, साइटोकाइन्स होते हैं और मेटाबोलिज्म, ये सारे के सारे नेक्स्ट पीस। फिर उसके बाद में कुछ और हैं, नाइट्रोयूरिक क्या है, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, these are the some peptides released from the left atria endothelium and left ventricles endothelium. ये दो जगह से नाम दिया है लेकिन टाइमिंग मस्त करते हैं इसका नाम। अब इनका काम क्या है, whenever the blood pressure is increasing, बढ़ता चला जाता है और ये डैमेज करता है, when the pressure is in the artery and the ventricles increase, the two important peptides are released and they cause vasodilatation and blood pressure remains normal. They bring down the blood pressure naturally. This is renin aldosterone system, आपको पता है सबको। किडनी में जब भी ब्लड कम पहुँचेगा, whenever there is a hypoventilation, hypovolemia, blood circulation towards the kidney is compromised, what will happen? इसके में kidney will release the renin. Renin will act over the angiotensinogen, it's a protein released by manufactured by the liver and it converts the angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1 itself is a vasoconstrictor, causing vasoconstriction, blood pressure rise. And then angiotensin 1, while passing through the lungs, it is converted to angiotensin 2 with the help of the angiotensin converting enzyme. This enzyme is found in the lungs. So angiotensin 2, again it will cause the further vasoconstriction and this will also affect the adrenal cortex and causes the release of the aldosterone hormone. Aldosterone hormone itself is a mineral corticoid. It will start reabsorption of the water and sodium. Sodium and water in the blood will increase and both will be causing increasing in the volume of the blood. Intravascular हो गया, ठीक, hypertension, okay, and again it causing vasoconstriction. अब इसके बाद में भी है कुछ, angiotensin 2 is converting into the angiotensin 3 और ये होता amino peptidase A enzyme,
converted into T, and it goes and works on the secretion of the vasopressin from the hypothalamus. Vasopressin is antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone will retain the, again it will increase the absorption of the sodium and water from the relatively hypervolemia, and the blood pressure will increase. And angiotensin 2-3 is converted again with the help of the aminopeptides N enzyme into the 4, and it causes further vasoconstriction and release of the renin from the kidney. So all these things occurs together, and this will cause the vasoconstriction, increase in the amount of the sodium and water into the blood, and the blood pressure. और ये सारी चीजें सिस्टम एक साथ जब स्टिमुलेट होती हैं, 1, 2, 3, all the vasoconstriction, kidney is activated, everything is activated, it results into the, when the tempo of all these mechanism is high, it results into the malignant hypertension. It results into the malignant. Next please. वही है, सब कुछ वही है, मैंने बता दिया। अमाइनोपेप्टाइड ये N है, B नहीं है, ओके वही सब गेम सेम साइड। हाँ एक चीज बताना भूल गया, एल्डोस्टेरोन का दो इफेक्ट होते हैं। वन इज इट रिटेन्स द सोडियम एंड इट कॉज एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। सॉरी थी, अब दिखाना चाह रहा था साहब को, देखिए सोडियम। अच्छा ठीक है, यू आर राइट, ओके मेरी नजर आप है सिर्फ, ओके तो बीवी के सामने कह रहा हूँ, इससे डर नहीं है। क्या यार खराब कर देते हो आप, ओके इट रिटेन्स द सोडियम एंड वाटर but it increases the excretion of the potassium. So whenever potassium loss is there, it is associated with the hypertension. इसलिए कहते हैं केला खाओ, केला में पोटेशियम होता है, पोटेशियम यूज्ड टू डायलेट द ब्लड वेसल्स. तो hypokalemia, this is not hypokalemia. If potassium level is down, it is hypertension. If sodium, if calcium level is down, this is hypertension. Calcium कैसे associated है बताऊँ थोड़ा सा. Whenever the calcium level is down, आमतौर पर calcium is a very, क्या कहना चाहिए, ये बड़ा धोखे देने वाला टेस्ट है. कैल्शियम बड़ा धोखा देने वाला मिस्टीरियस टेस्ट है. बोन से निकल के कैल्शियम आ जाता है, तो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन्ड बट देयर इज हाइपोकैल्शियमिया. क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन इज रिलीज्ड एंड व्हिच कॉजेस डिप्लीशन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. वो एक्टिवेट हो जाता है एंड पैराथायराइड हार्मोन्स इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. तो कैल्शियम लेवल डाउन होगा, पैराथायराइड स्टिमुलेट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम लेवल ठीक रहना चाहिए. हाइपोकैलेमिया पोटेशियम लेवल ठीक होना चाहिए. हाइपोकैलेमिया विल कॉज द एंड हाइपरनेट्रीमिया विल कॉज हाइपरटेंशन. नेक्स्ट रीजन नहीं करेंगे और देर होगी शायद एक बजे. These are the symptoms. Most of the time patient is asymptomatic. Okay, patient is asymptomatic, that doesn't mean you feel too happy. No, it's very dangerous. अगर ब्लड प्रेशर का सिम्टम आ जाए, patient will get the treatment, patient will seek the treatment, and the things will be under control. And if the symptom is not there, that is very dangerous. That means the target organs, brain, kidney, liver, so target brain, kidney, blood vessels, and kidneys are under threat. Constant damage is taking place, and at any point of time, of course, retina too. At any point of time, any damage, any untoward incident can take place. So, asymptomatic hypertension is more dangerous than the symptomatic hypertension. The moment it is discovered that patient is hypertension, he must be, educated for getting the treatment. इतने आसानी से मरीज इलाज नहीं देते. कहते मुझे कुछ हुआ नहीं, उसको समझाएं, उसको बताएं, उसको एजुकेट करें, उसकी काउंसलिंग करें. यू नीड ट्रीटमेंट बिकॉज यू आर अंडर थ्रेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दिस कैन बी फैटल. ओके, तो ये थोड़ा एक मिनट, ये सारे सिम्टम्स फटीग मालूम है आपको. चलिए, these are the complication. Hypertension, cardiovascular diseases, खाली मार जाएगी. Two reasons are there. Either the cerebral hemorrhage because of the systolic rise in the hypertension, and second is damage, constant damage to the arterial system will cause the thrombosis. So either there is cerebral thrombosis or there is a cerebrovascular accident in the form of the thrombosis or the hemorrhage that can cause the hemiplegia, etc.
सो हाइपरटेंशन सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, डिमेंशिया, धीरे धीरे डिमेंशिया, अगर धीरे धीरे बढ़ता है डिमेंशिया हो जाएगी। हाइपरटेंशन किडनी डिजीज, किडनी फेलियर विल टेक प्लेस, क्रॉनिक रीनल डिजीज फॉर सीक्वेंटली। हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेटिनोपैथी, ठीक है ना। देन हाइपरटेंशन इंसेप्टोपैथी, ब्रेन इंवॉल्वमेंट, दीस आर द वेरियस कॉजेस। चलिए आगे। तो साहब ये रहा आपका हाइपरटेंशन, पहली चीज तो पूरी, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई बात करनी तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैडम सवाल आप कर लीजिए। सुप्रीम यूनानी मेडिसिन क्या भाई, ज़्यादतूस का जिक्र है यूनानी मेडिसिन बहुत पहले से, आज से नहीं, ये बुखरात के वक्त से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सब क्या क्या कॉजेज यूनानी मेडिसिन में बताए गए हैं, हम उसको कैसे यूनानी को असल में क्या है, सब कुछ है। और मैं अपना समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, उस तरह मैं गलत हूँ। हमेशा राय होती है, मेरी राय गलत होती है, मेरी ये सोच है। यूनानी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, वी नीड टू पुट द साइंस बिहाइंड द यूनानी कॉन्सेप्ट। We need to explain on the principles of the modern sciences behind the Unani, so that the entire world understands the Unani. मेरी बात समझते हैं, ये मेरी सोच है। बहुत मुझे लोग गलत कहें कि नहीं गलत, आप यूनानी इंटरप्रेट करें, लेकिन मेरी ये सोच है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी हम यूनानी पढ़ाएं तो उसके पीछे उसमें क्या क्या साइंस इन्वॉल्व है वो बताइए। ओके, सो द इंफालात नफसानिया, रंज, गम, बीवी की डांट, घर पे रोज, ठीक है, रोज के कचरे, पैसे की डिमांड, ये सारी चीजें जो हैं घर घर की ना, ताने जो सुनो, ऐसा एक बढ़िया सुनो मैडम, आपको सुना बहुत बढ़िया जोक सुना, बहुत अच्छा सा। एक मियाँ बीवी थे और उनके जो शौहर थे बड़े पढ़े लिखे आलिम, आमिल, तहज्जुद गुजार, आबिद, इबादत करने वाले, दुनिया उनको बहुत मानती थी, घर में दुआओं के लिए लाइन लगी रहती थी, लेकिन बीवी उनको कुछ नहीं समझती, एज यूजुअल क्या होती है, कुछ नहीं, रोज डांटती रहती थी। एक दिन वो अपने अमल के नतीजे में एक उस पर क्या कहते हैं, एक उनका जो जानमाज थी उस पर उड़ रहे थे, तो बीवी ने देखा, कहती है तुम खा, अपने आप को बुजुर्ग समझते हो। बुजुर्ग तो आज देखा तो मैंने क्या देखा कि एक साहब आमिल थे, बुजुर्ग थे, वो जानमाज में उड़ रहे थे ऊपर, फिर बेगम वो नहीं तभी डरे उड़ रहे थे। अब अगर ये टेढ़ा टेढ़ा बोलेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इन्फलात नफसानिया होगा नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वॉट एवर इज द कॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज्ड and what catecholamines, cortisol, HGH, these are three important hormones and they act over the glycogen in order to convert that glycogen into glucose and the blood pressure increase. Is it clear? तो जो ये इन्फाक्ट नफसानिया के बारे में लिखा गया है, ये इससे डायबिटीज होती है, ज़्यादा होती है, उसके पीछे क्या है, ये हार्मोन से रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, और ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं, या और भी कुछ थे बात करते हैं। चलिए अभी कितना बताइए। अब देखिए दूसरा कॉज बताया है कि दौरान हमल जो है ज़्यादा, ये ऑब्जर्वेशन आप किताब पढ़ेंगे यूनानी में, तो कहते हैं दौरान हमल ज़्यादा होती है। हमल को उन्होंने खुसूरवाद ठहराया है कि इसके वजह से डायबिटीज में in modern system medicine it is known as the gestational diabetes and see pregnancy क्या होगा, during the state of pregnancy placenta has been developed and it causes the release of the human placenta lactogen, estrogen, cortisol is used from the other, progesterone and protein, and all of them are diabetogenic in nature. They used to increase the level of the glucose in the blood, ठीक है ना। और उसके बाद में इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड द पेशेंट विल डेवलप द जेस्टेशनल डायबिटीज। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डायबिटीज, आफ्टर द डिलीवरी द डायबिटीज डिसअपियर्स, लेकिन सम टाइम इट मे कंटिन्यू डिपेंडिंग, वेट बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में जिन लेडीज ने वेट कम नहीं किया, बाद में वो बढ़ा रह गया और बढ़ा लिया, और लड्डू खिला के कौन वाले गोंद के लड्डू, देसी घी के लड्डू बढ़िया बढ़िया वाले, और उससे बढ़ा के वेट बढ़ा दिया तो फिर वो डायबिटीज परमानेंट। ओके, थर्ड कॉज इज सूए मिजाज भारी गुर्दा, कहते हैं गुर्दे का सूए मिजाज इसकी
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है गुर्दे का सूमेजर. एंड व्हाट यूनानी फिजिशियन यूज्ड टू से ड्यू टू द कोर्स ऑफ द सूमेजर गुर्दा हार्ट या बर्न हार्ट ऑफ द गुर्दा, व्हाट हैपेंस दे यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मवाद शकरिया कहते हैं जो शुगर फ्रॉम द लीवर एंड इंटेस्टाइन, उसे एब्जॉर्ब करते हैं अपने तरफ, और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो पेशाब के रास्ते से निकालते हैं और उसको निकले हुए पेशाब के असल शुगर का कॉन्सेप्ट यूनानी में जो डायबिटीज़ का है वो शुगर उससे ही पेशाब से ही. उस टाइम ब्लड टेस्ट नहीं थे, वो कहते हैं पेशाब में शुगर आ रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, चींटी लग रही है, मज़ा मीठा है, इसलिए ये डायबिटीज़ है. तो अब ये बताइए उनका ये गुर्दा कॉन्सेप्ट था, होता क्या है देखिए एग्जैक्टली है क्या इसमें. रीनल थ्रेशोल्ड फॉर द किडनी इज 180 मिलीग्राम ब्लड में शुगर है, तो इतनी शुगर पेशाब में नहीं निकलती, रीनल थ्रेशोल्ड है, इससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन ये 180 से ऊपर होती है तो किडनी रीएब्जॉर्ब नहीं करती, इट कीप्स ऑन पासिंग. एग्जैक्टली दिस हैपेंस. But in inflammation, what happens? The threshold becomes down. Of course, blood sugar level is below 180. Even then, the kidney is excreting the sugar into the. During inflammation, the threshold of the kidney is down, and the patient develops glycosuria. That is known as renal glycosuria. That is known as renal glycosuria. This is one. And renal artery pressure by any means it is increased. More filtration of the sugar into the tissue. Most sugar the patient will pass. अब इसमें क्या होता है, असाइटिस हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, रीनल आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाए, कोई ट्यूमर हो जाए प्रेशराइज कर रहा है. सो एनी कंडीशन विच कॉजेज द आर्टियल प्रेशर टू बी इंक्रीज इट विल कॉज द रीनल गलाइकोसूरिया. व्हाट इज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, क्या हम पढ़ते थे बच्चे स्टूडेंट थे, बच्चे तो आज भी हैं, ठीक है ना, जब हम आज भी स्टूडेंट भी हैं, कोई फर्क नहीं आया है, अल्लाह का एहसान है, मैं भी स्टूडेंट एंड आई वांट टू रिमेन स्टूडेंट इज द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ. ओके, तो हम समझते जब आता था ज़ोफ़े जिगर, जिगर की खराबी, जिगर की बरूदत, जिस्म की बरूदत, क्या तकवासी, ये पढ़ने की चीज़ है. हमको पता है इंसुलिन को ये डायबिटीज़ होती है, ये हमको गलत पढ़ाया जा रहा है. इस किस्म के ताने मारते थे, हम गलत बात नहीं करते थे, अपने उस्ताद में सुधरते थे और वो बेचारे खामोश रहते थे, उनको बता नहीं पाते. लेकिन आज हमको रियलाइज होता है हम गलत थे. आज पता चला यूनानी मेडिसिन में तिब्बा ने इतने 100 साल पहले 2000 साल पहले जो कहा था कि ज़ोफ़े जिगर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज फॉर पॉल्यूशन फॉर डायबिटीज मेलाइटस. दैट्स 100% राइट. We only right. During the last 1 decade, it has been established that liver plays a very important role in the position of the insulin-resistant and diabetes mellitus. And how I will explain. ये जिगर का पता. Oh, this is the major site for the metabolism. सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है. ज़ोफ़े जिगर leads to the altered metabolism. ठीक है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा. It can be correlated with non-uncorrelated. आज के ज़माने में आप किसी का भी अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, सबको ग्रेड 1. वजह फिर वही है, हमको ज़्यादा खाने को मिल रहा है. बढ़िया बढ़िया खाने खाते हैं. पहले साइकिल चलाते थे, अब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, चलते नहीं हैं पैदल, खाते ज़्यादा हैं, दूसरे के हिस्से खाते हैं, है ना मैडम. जो हमारे घर में काम करती है वो जो 2 रोटी मिलती है हम 4 रोटी खाते हैं, उसके हिस्से खा रहे नहीं खा रहे. अल्लाह ने उसके हिस्से बनाया था. डायबिटीज तभी होगी जब हम दूसरे के हिस्से खाना शुरू कर दें. अपने हिस्से खाएं और अपने हिस्से का काम करें तो डायबिटीज नहीं होगी. दूसरे के हिस्से खाएंगे और अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो डायबिटीज. बड़ी सिंपल सी बात है. अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, हमको जो करना चाहिए घर के बर्तन मांझने वो करता हूँ, ठीक है ना, दूसरे के हिस्से का काम करें तो डायबिटीज होगी. इससे व्हाट इज देयर इनटेक एंड आउटपुट. इनटेक इज मोर, आउटपुट इज लेस. वो एनर्जी बॉडी में इकट्ठा होती है, बॉडी वेट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायबिटीज होती है. बट सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये आप देखिए non-alcoholic liver disease is because of this. For that's the imbalance between the intake and output of energy. So it causes insulin resistance and the risk of the factors of the diabetes, obesity, hyperlipidemia, hypertension. ये 3 diseases इससे पैदा होंगी. Obesity, dyslipidemia, metabolism. Please go ahead. अभी चलते हैं. ये देखिए ज़ोफ़े जिगर हुआ था, बरूदत पैदा हुई,
मेटाबॉलिज्म कम होगा, बढ़ोतरी में मेटाबॉलिज्म कम होता है, हरास बढ़ती मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होगी, उसके नतीजे में ओबेसिटी होगी, उसके नतीजे में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, और इन तीनों कंडीशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन काम नहीं करती, some other factors are there, they are neutralizing the effect of the insulin, so insulin is unable to cause the penetration of the sugar into the cell, and the sugar is not being metabolized, hyperglycemia and diabetes. Next please. अब देखिए कैसे बनता है, या तो खाने में हम ज़्यादा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फैट, या हमने पहले से खा के रखा, पेट में बढ़ रखी है फैट, क्या होगा, एडिपोज टिश्यू। From the two sources fatty acids come from the cell, और ये सारे फैटी एसिड नंबर 2 ये एसिडेट्स में कुछ बदल जाते हैं कोलेस्ट्रॉल में, फॉस्फोलिपिड में, बॉडी में, लेकिन फैटी एसिड्स जो हैं फ्री फैटी एसिड अल्फा ग्लाइसोफॉस्फेट के नतीजे जिसे कंबाइन करके बन जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड लिपिड एसेक्टर प्रोटीन से मिलकर के लाइपोप्रोटीन्स बनती हैं। ये लाइपोप्रोटीन्स एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल जो बनती हैं ये ब्लड में और इसके नतीजे में चलता है। This is normal phenomena. But in any case, either the adipose tissue, formation of the free fatty acid is more there from the adipose tissue, or you keep on eating all the time biryani and what nahari and korma, all these things. ये बढ़ाते रहते हैं आप फैटी बढ़ते हैं, and this much of the fatty acid is beyond the capacity of the liver to convert into triglycerides. तो free fatty acid बनने छूटेंगे, या ट्राइग्लिसराइड बन गए, लिपिड एसेक्टर प्रोटीन्स कम बढ़ गई तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन एनी केस एट एनी लेवल द चेंज कुड बी देयर एंड दैट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड टू द लिवर एंड द फैटी एसिड, ठीक है ना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर which causes the insulin resistance। ये इंसुलिन की एक्टिविटी को कम करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं जो शुगर में। नेक्स्ट प्लीज, ये दूसरा साइड देखें आप, ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये अपने आप में एक ग्लैंड होती है। डायबिटीज में एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये अपने आप में एक ग्लैंड है, और उससे निकलता क्या है, देखिए एडिपोकाइनिन्स, इसमें एडिपोकाइनिन्स आर द नंबर ऑफ द हार्मोन, नंबर ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, सब हार्मोन्स कितने बिहेव करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक्टिन। लैक्टिन, फ्री फैटी एसिड, इन्फ्लेमेशन, ये तीनों चीजें निकलती हैं, और इनके फ्री फैटी एसिड, लैक्टिन, ये सारे के सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसुलिन बिकम्स एंटागोनाइज्ड। ये नॉर्मल है, जहाँ से आइसोलेट्स ऑफ पैंक्रियास से निकल रही, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखिए ये सब बड़ा होने लगती है। It will increase the production of the insulin, and insulin की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी वो काम नहीं करेगी, जरूरत और बढ़ रही, insulin resistance is increasing, there is a hyperinsulinemia even though the patient is in diabetes, because it cannot cause the introduction of the sugar into the cell, ये बढ़ता चला जाएगा, और in due course of time after 5 years 10 years what happens, ये exhaust कर जाएंगी and ये decrease करेंगी, the cells of the pancreas will die because of constipation। तो इस तरीके से ओबेसिटी इंपॉर्टेंट, तो फूड रोल एडिपोज टिश्यू इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। ये जो है ओबेसिटी हो, जिससे कहते हैं तब ये क्या कहते हैं बारीक सूए मिजाज बदन का हो जाए, ओबेसिटी लग जाए, या लीवर के अंदर एडिपोज टिश्यू फैटी लीवर की शक्ल में हो, इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो हार्मोन्स जो डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं वो पैदा होने ज़्यादा होंगे। इंसुलिन अकेली, मतलब एक जान हजार दुश्मन, एक अकेली इंसुलिन उसके कितने दुश्मन, बाप रे बाप, पूरी यूनानी मेडिसिन। तो एक जान हजार दुश्मन, तो बेचारा कब तक सर्वाइव करेगा, फाइनली ही हैज टू डाई एंड द डायबिटीज विल डेवलप। सो दिस इज अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द डायबिटीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द यूनानी पर्सपेक्टिव। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।